to justice जो है, how is that being affected? Because I have a petition and that I want to bring under Article 184, I am prevented by this committee because it will first go to the committee. They may or may not decide that this petition should be put before the Honorable Supreme Court. What I am submitting is, if I may be allowed to complete my argument, my Lordship. If the Chief Justice has exclusive rights, then access to justice is not affected. The Chief Justice is not, there is no provision prior to this law that the Honorable Chief Justice will examine the petition. It is his prerogative whether he fixes it for hearing or not, but he will not decide whether this petition should go for hearing or not. Whereas this committee is going to decide, and it is not clear from this law whether there will be a right of hearing or not. I just want a clarification. In interpretation of Section 3 of the Act, that it's a determination by the three-member committee which matter can be heard or not, or is it merely determining who will hear the matter? Not if, पढ़ लेना उसकी language देखना, or if it will be heard. जी, मेरी ये petition का मालूम नहीं, petition छोड़िए, कानून पढ़िए ना. जी, मैं कानूनी पढ़ रहा हूँ, page 9 पे. ये जरा वजाहत कर दें इस दोनों बातों में. Page 9 पे है. Mr. Hassan, जी सर. I think you are going ahead of the argument. You're going into the nitty-gritty of Section 3 and 4 and 5 and 7. The first question that needs to be answered is, जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि जी एक्सेस टू जस्टिस और कौन सा फंडामेंटल राइट अफेक्ट होता है. नाउ एक्सेस टू जस्टिस इज सेल्फ अ फंडामेंटल राइट. और व्हाट इज एक्सेस टू जस्टिस? एक्सेस टू जस्टिस इज टू बी एबल टू अप्रोच a Supreme Court or a court which is independent. So where any law or any provision of any law, according to you, affects the independence of judiciary, then it directly affects your fundamental right to access to justice, because part of the access to justice is access to an independent court. Number one. आप हमें ये आर्गुमेंट बताइए कि ये जो एक्सेस टू जस्टिस का फंडामेंटल राइट है, नंबर वन, ये किस तरह अफेक्ट होता है. नंबर टू, अगर ये फंडामेंटल राइट अफेक्ट होता है तो दैट बाय इटसेल्फ बाय डेफिनेशन इज अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. नंबर टू. Number three, the argument whether it is competent, maintainable, not maintainable, I think we have gone beyond that. The very fact that one side is saying it does not affect independence of judiciary, the other side is saying it does affect the independence of judiciary, and this court is called upon to examine whether it does or it does not. So the very fact that we are examining that question itself shows that it is a question that needs to be examined and is therefore a maintainable issue or a petition. In fact, related to that also the question, we are not debating whether the law is good Mr. or Hassan, bad. We are, Mr. Hassan, If I may request my distinguished colleague that let Mr. Hassan at least address what one of us have asked, because otherwise we won't. my question actually is totally related to what has been asked. In the context of access to justice, I had previously asked that when a full court sits, the right of appeal is not available to the petitioner. If the objective of the law was to give access to justice, and the response of the Federation is that, well, when the committee decides that a full court should sit, then there's no right of appeal. Does that bar the right of access to justice? Is this a substantive right that is being prevented? Or can we just say that the power that was vested in the Chief Justice, to that extent, it was incorrect? Now that the committee will decide that a bench of 10, 11, or 12 will sit, and so the right of appeal is blocked. Does that affect the right of access to justice? that, your leadership, is a very pertinent question. That, in my humble opinion, it does, but I have an answer to that. How
howsoever irrational that argument may appear, but maybe the framers of the Constitution did not have in mind that that is a solution, but there is a solution in the Constitution which could perhaps, in a very, let's say, extraordinary situation, may be resorted to by the Honorable Chief Justice if a full court hears. And that's contained in Article 186. Let me just find it out. Where there is a power, if there are reasons, substantial reasons, the Honorable Chief Justice can actually increase the strength of the Honorable Supreme Court. That's a different situation. Yes, in but fact, what by not giving the right of appeal, it basically means either the Supreme Court can never sit as a full bench and can never sit as a 10 or 11, 12-member bench. That is one way of looking at it, because that ability of the court to constitute its bench, a larger bench where required, is now blocked if the right of appeal has to be given meaning. the right of appeal under Article 185 of this Constitution is itself given what could be a right of appeal. And in fact, that is one of my arguments when I'll come to that provision, that Article 185(3) does not actually empowers the Honorable Supreme Court in all other matters which are not mentioned there to have a direct right of appeal. It is only by way of special leave to appeal. So there is a distinction that perhaps the drafters of this legislation may not have appreciated. But let me come to your Lordship's question. In fact, there is another question which leads to what your Lordship is saying, is that what we are saying is, howsoever good the law may be, it has to follow a certain provision. Whatsoever, we don't doubt the intentions of the Parliament. Parliament is, of course, supreme. Supreme Court is, I believe, the supreme thing over the Supreme Court and the Parliament is the Constitution. The Honorable Supreme Court is bound by the Constitution, the Parliament is bound by the Constitution. And one of the points that I have mentioned later on is that the oath of offices, all the oaths, whether it's of the Chief Justice, President, Prime Minister, Parliamentarian, they have three common words: preserve, protect, and defend. The Constitution. Oaths mein. So there is a duty of everyone who takes an oath. My Lord, Schedule 3, Oath of Office, President. President का नहीं, तो judges का पढ़िए. Judges का पढ़ देते हैं, my Lord. जी, ये क्या आप जो आर्गुमेंट डेवलप कर रहे हैं जरा बताएं, तो इसकी बुनियाद तो रखिए पहले. My Lord, बुनियाद पढ़िए ना, हजूर क्या पढ़ना चाहते हैं उसमें से? Chief Justice of Pakistan of the High Court or Judge of the Supreme Court of the High Court, Articles 178, 194. I, so and so, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of Pakistan or a Judge of the Supreme Court of Pakistan or Chief Justice or a Judge of the High Court for the province or provinces of, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. So the Constitution. ये जो लफ्ज़ हैं, तीन लफ्ज़ and the law, ये जरा मद्देनजर रखिए और आगे बताइए पॉइंट आपका. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decision, that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law without fear of favor, affection or ill will. बताइए क्या पॉइंट आप? Malad, the point is this, that the Constitution has demarked the powers of the Parliament. नहीं, आप आइन के ओथ की बात कर रहे थे, अब आपने उसको अधूरा छोड़ दिया आर्गुमेंट नहीं, को. Malad, अधूरा नहीं छोड़ा, मैं आ रहा हूँ. उस बहस को पूरी मुकम्मल तो कर लें कि हमें समझ तो आ जाए आपकी बात. Malad, the Parliament. पार्लियामेंट की बात इसमें कोई आ ही नहीं रही ओथ में. मैं ओथ में, Malad, Parliament की अगर आप members की ओथ देखें, उनमें भी जो मैं आर्गुमेंट प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट, so it is equally
incumbent upon the parliament to follow what the constitution says. The constitution has given them तो power of इसमें legislation. कोई दो राय हो सकती under- है, इसमें कोई दो राय हो सकती हैं। मतलब 142 में और read with entry 55, they have a certain limitation. हसन on साहब which देखिए, legislation देखिए can be आपको हम पूरा आपकी कदर करते हैं और सुनेंगे, My lord, I'm grateful. मगर अगर आप दलाइल ही नहीं दे रहे हैं, आपने ओथ को टच किया, अब आप दूसरी बात चलेगा, या तो इस बात को छोड़ दीजिए, कोई और answer बताए। the मुझे अभी question. तक मैंने कलम इस्तेमाल नहीं किया, मैं लिखूं क्या आपका दलाइल समझूंगा तो लिखूंगा ना। My lord, let me then proceed the way I have proceeded rather than, आपने ओथ का जिक्र किया, मैंने कहा ओथ पढ़ दीजिए, उसमें एंड लॉ लिखा हुआ है, आप वजाहत नहीं कर रहे हैं उधर। लॉर्ड, मैं ये सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि इसमें the Honorable Supreme Court has to remain within the constitutional framework, the Parliament has to remain within the अगर constitutional जब मार्शल framework. लॉ लगते हैं तो हथियार फेंक देते हैं जी। फिर जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं, और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो ओथ भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है, मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती है शुरू। लॉर्ड, Parliament, वहां भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात को। my lord, आप आया करें, वहां भी पिटिशन लाया करें ना। जी, लेकर आए ना my lord, इसीलिए नहीं, ये मार्शल लॉ नहीं, ये एक पार्लियामान ने कानून फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन। ये बताइए, आप बता ही नहीं रहे ओथ की बात, हुई आपका आर्गुमेंट ये खत्म। बताइए, नहीं my lord, खत्म नहीं my lord, आप ओथ में my lord, एग्जैक्टली इस पे आ जाएं, पार्लियामेंट की Lord, कॉम्पिटेंस मैं है आंसर कि कर नहीं दूं है? अगर अब इजाजत नहीं, दें तो। पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस है या नहीं है? my lord, नहीं है नहीं, वो बता दीजिएगा कैसे नहीं है। my lord, आप 142 देखें, 142 को देख लीजिए। वन 142 के अंदर सब्जेक्ट मैटर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉज, subject to the constitution, then it again says subject to the constitution. So this is restricted power. The Majlis Shura Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. Now, if 142A is read with entry 55, it does not give them any power which controls the procedure because that's a constitutional power under आर्टिकल 55 आइटम 55 में है ना, आप वो पढ़ लें, My lord, अब उसका तशरीह की बात है उसकी। जी my lord, इसको सी भी पढ़ लें हम, अगर 142 जो मर्जी पढ़ना चाहें, मगर 142 के ऊपर आए हुए हैं तो सी में देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन दैट आल्सो, इसको भी मद्देनजर रखना जरूरी है। सब्जेक्ट टू पैराग्राफ बी, द प्रोविंशियल असेंबली शैल एंड मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल नॉट have the power to make laws with respect to any matter not enumerated in the federal legislative list. So everything revolves around the अच्छा, एक federal चीज आप ये बहस कर रहे हैं कि अगर वो लिखा ना हो, अंदराज ना हो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में, तब पार्लियामान उसके मुतालिक कोई कानून नहीं बना सकता, हाँ या ना? मतलब that would be subject to your lordship's भाई interpretation. आपकी क्या राय है? मेरी राय हमें तो ये- अपनी राय पता है, मतलब- आप अपनी राय मतलब बताएं। Very honestly, the entries are just a guideline. It can be interpreted by your lordship. भाई आपकी I राय am here पूछ to रहे हैं। assist this honorable court. I am not here to win or lose the case, my lord. I भाई have तो to. आपकी राय क्या है, असिस्ट कीजिए ना। My lord, मेरी राय ये है कि these words of 55, अगर आप इजाजत दें मैं पढ़ देता हूँ। Jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplementary powers. इस wording में even with a अच्छा एक सेकंड, इनकी जो बहस है अदर साइड की, इनने जो नोट्स फाइल किए उन्होंने ये फरमाया है कि हम आपके हकूक सुप्रीम कोर्ट के सलब नहीं कर रहे हैं या कम नहीं कर रहे हैं, हम इनको बढ़ा रहे हैं। पहले 3 लोग या 5 लोग या पूरी जो भी 5, 6, 7 की बेंच सुन सकती थी एक केस, अब हमने एक अपील का भी इख्तियार दे दिया है, तो ये पॉइंट आप उधर ले जा रहे हैं ना। तो इसमें हम तो अपने पास तो अपील नहीं सुनेंगे, आप ही फैसला करेंगे। तो इसमें आप बस आपका कहना है कि जो एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया वो हतमी होना चाहिए, उस पर कोई अपील नहीं होना चाहिए, ये आपका मौक़िफ़ नहीं है? मालूम, मेरा ये मौक़िफ़ बिल्कुल नहीं है। तो फिर समझाइए। जो मेरा मौक़िफ़ ये है, जो भी आप राइट दें, जो भी आप लॉ बनाएं, it has to follow
what is provided in the constitution. अपनी मर्जी से पार्लियामेंट जो है whatever they think is right नहीं तो is पार्लियामेंट not ये कह रही है, permissive. पार्लियामेंट ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट को मजीद इख्तियार दे रहे हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, कॉन्स्टिट्यूशन यही को तो वो अमेंड कर लें। उनकी नजर में अब आपने पिटीशन फाइल की ना, उनकी नजर में उन्होंने सही किया है और उन्होंने मजीद एक फोरम दे दिया है। ठीक है, 3 लोगों ने फैसला कर लिया, क्योंकि अब आप अगर हिस्टोरिकली इस बात को कोई बात ही नहीं कर रहा है, हिस्टोरिकली अब बात को देखें तो बहुत तनकीद की है वकीलों ने बिलखुसूस, और जिसको कहते हैं ना सोशल समाज ने भी, कि सुप्रीम कोर्ट ने बेख्तियार इस्तेमाल किए 184(3) के तहत इख्तियारात। तो इसमें बहुत से लोगों के पर्सनल हकूक, एक तो होता है बुनियादी बड़ी बड़ी बातें कि ब्रिक किल्न वर्कर्स नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, वो आप उन मामलों में भी चले गए हैं, इलेक्शन मैटर्स में चले गए हैं, रेट ऑफ वो क्या होना चाहिए, शक्कर की प्राइस की क्या होना चाहिए। तो अगर किसी को ये आपका फैसला नहीं पसंद आए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, बस खत्म ही हो गया। तो उनका ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने हद में रहती, पहली बात आपने हदूद की तजावुज़ किया है, इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि हम कानून बनाएं और आपको याद दहानी करवाएं, मगर आप अगर याद दहानी नहीं करते हैं तो आप ही लोग, एक इस पे नज़रसानी का बहुत हदूद कम होता है, एक आप इस पे अपील सुन लीजिए, हो सकता है वही फैसले पे हम मोहर लगा दें और कहें जी बड़ा उम्दा फैसला था। ठीक है, तो इससे एक आम शहरी के हकूक पे जो आप खड़े हुए ना शहरी की हैसियत में, आपकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है। आप सपोज आप किसी चीज़ में आते और आपके खिलाफ फैसला हो जाता है 184 में, तो आप तो सर पीठ जोड़ने लगते कि एक हक, बुनियादी हकूक अपील का तो दुनिया के हर आइन और कानून में दिया गया है, आपने तो एक कानून का हक भी हमें नहीं दिया है। तो फिर आपको क्या सेहत पे असर पड़ रहा है। हमारे सेहत पे शायद असर पड़े कि हमारे एक दफ़ा हमने कह दिया बस हर्फ आखिर है। मतलब आपने क्योंकि मना किया था कि इधर उधर हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना, मैं नहीं गया, लेकिन आई विल आंसर टू योर लॉर्डशिप क्वेश्चन। देखिए हर चीज को देखना चाहिए कॉन्टेक्स्ट में। जी, I am answering this question. My lord, this is if I may be permitted, this is not the first time that a question of constitution of benches has been raised. The earliest case that I was able to find was Hamid Sarfaraz case, where there was an allegation that the bench comprised from a particular region. So the argument is there have been substantial constitutional amendments, and one of the major constitutional amendment was 18th constitutional amendment. All those cases where these allegations and the public outcry and everything was before the parliament, they chose not to amend the constitution or article 191. So this is not for your lordship to come and then say आप मेरे सवाल का तो जवाब दे ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल मतलब यही उसका जवाब है कि जो आप क्राई की बात कर रहे हैं कि लोगों ने कहा आपको राइट मैं आपको बता रहा हूँ आपको नुकसान क्या होगा, आपको क्या नुकसान होगा कि एक अपील आपको हक मिल जाए। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बीइंग फॉलोड, दैट इज अ मेजर नुकसान। आपको तकलीफ हो रही है इससे? मतलब मुझे से हो रही है बिकॉज देन द सुप्रीम कोर्ट विल स्विंग आफ्टर एवरी ईयर, एवरी टाइम अ न्यू चीफ जस्टिस विल कम, there would be no certainty of the decisions, there would be no certainty of benches, that will affect the socio-economic rights of the Pakistan. एक सेकंड ठहरिए, ये एक सेकंड, ये हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफा मार्शल लॉ को इंडोर्स किया है, फिर एक जजमेंट आया था कि जितने ये पहले जजमेंट हैं सारे गलत हैं और आइन पे पाबंदी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि नहीं, आप उसी लकीर पे अटके रहे हैं, तो आप कह रहे हैं अगले मार्शल लॉ का दरवाजा आप खुलवाना चाहते हैं हमसे। मैं ये कह रहा हूं कि एवरीथिंग हैज टू बी कम विद इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज टू सिट डाउन and come and maybe amend their rules, amend the laws. Learned Council, ये बताइए, इंसाफ तक रसाई अगर पार्लियामेंट ने देनी हो हक, उस पे लेजिस्लेट नहीं कर सकती है पार्लियामेंट? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, बट लॉ को फॉलो करके, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके। सुन तो ले, आप ये कह रहे हैं कि इंसाफ तक रसाई के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना चाहिए पार्लियामेंट को। मतलब इधर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुन लेना, एक राइट ऑफ अपील दी है, दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू जस्टिस एंड राइट टू अपील relating to a jurisdiction which already is vested in the Supreme Court. Up that remedy, would that not be covered? Lordship, there are two aspects. You are saying
देखिए मैं आपको सर मैं अगर इनको सर राइट ऑफ अपील बाय अ स्टैट्यूट टू अ सुप्रीम कोर्ट मैं इज अ समझ डिफरेंट गया, आप थिंग ये कह द रहे हैं- राइट ऑफ अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल jurisdiction is a totally different thing ये कह रहे हैं बहुत से कि सारे बातें- लॉज हैं जिसके अंदर These are अपील two प्रोवाइड की गई है different सुप्रीम things. कोर्ट में। जी। बहुत से ऐसे लॉज हैं जिसमें डायरेक्टली अपील, बिल्कुल कंटेंट ऑफ ठीक है। कोर्ट ऑर्डिनेंस में नहीं है और अपील। एक्सेस ऑफ तो आप जस्टिस कहें कि उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 204 के साथ अपील होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए मैं कुछ मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ Mr. पे Hassan Irfan, just to add to what my learned brother has said, the basic question is not whether an appeal can be provided or appeal cannot be provided. The basic question is which procedure, which entity would provide that appeal, where the Constitution needed to provide an appeal, it provided an appeal. absolutely 184 is original jurisdiction. Okay? उसकी अपील अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने 185 में प्रोवाइड नहीं की तो कॉन्स्टिट्यूशन का मंशा नहीं था वो अपील प्रोवाइड करना। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन जिधर सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है उसमें अपील थ्रू ऑर्डिनरी स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन डिस्पेंसेशन नहीं हो सकती। अगर ये मंशा है कि 184(3) की अपील प्रोवाइड की जाए, अब जो ओरिजिनल लॉ मेकर के जहन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, then the only way to interfere in or provide an addition to or provide an adjunct to 184(3) is by way of a constitutional interpretation or constitutional amendment. that is what Addition to the constitution. इस तरह तो ये है कि लॉ मेकिंग में आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ रख दें, कॉन्स्टिट्यूशन जो नहीं भी प्रोवाइड करती आप कहें जी मेरे पास लॉ की पावर है, मैं एक अपील नहीं मैं 4 अपीलें दे देता हूँ। Then That where is not does the possible. constitution that goes? would be deviating from the constitutional mandate. और मतलब एक point और 184 Mr. Hassan, Mr. Mr. Irfan, Hassan, whether, ये जो contempt of whether court ordinance है- incompetence of the parliament can be condoned on the ground that the intention of the lawmaker is good? मतलब can you repeat that the question? Whether the incompetence of the parliament can be condoned on the ground that the intention of the parliament is good? No, my lord. I think the intention has got nothing to do with following the So constitution. whatever may be in the law, whether it provides access to justice or provides extra remedy to the public at large, it cannot be treated as a good law unless the parliament has the competence to do it. Legislative competence. That is absolutely that is a very clear rule throughout the world in all We could look at आपसे- entry 55 आपसे- where the competence is derived from. Entry 55 says that so far as the Supreme Court is concerned, to such extent as expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction. Which means that it is something that is provided under the Constitution and it is that jurisdiction which is being enlarged. Is that correct? That's correct. So, आप ये बताइए कि जो provisions दिए हैं power 2, 3, 4 में, 6 में, 7 में, ये constitution में कहाँ दिया हुआ है जिसकी enlargement हो रही है? All that the law can do, the legislature can do is enlarge something that is provided by or under the constitution. ये वाली power कहाँ दी है constitution तो नहीं दी, में मतलब जिसको वो enlarge कर रहा है? This is what my whole argument is, because the argument that I actually started to begin was that 1843 does not start with the word subject to constitution or subject to law. It's not just 184. It's any provision of the complete. Constitution. So if we uphold this law, then it means that we have to read into 184 saying subject to law, the Supreme Court has these powers, which is not possible by any stretch of interpretation or stretch of imagination. That will tend amount to amending the Constitution or rewriting the Constitution, because the framers of the Constitution have not placed any fetter on the power of a petitioner to come and bring a petition. And there is also a second power under 1843, which is a power of the Supreme Court to make an order. अच्छा, आप जो बार बार बात कर रहे हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की,
एक जजमेंट है जफर हादी शाह साहब का केस जी, वो पार्लियामेंट तो छोड़िए, उन्होंने तो एक फर्द वाहिद को सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार दे दिया। आप उससे इत्तेफाक करते हैं? आप उससे इत्तेफाक करते हैं? मैं नहीं करता मतलब। और सपोज अगर सुन लीजिए पूरी बात, और अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं करते हैं तो ये बड़ा अच्छा कानून नहीं बना है पार्लियामेंट ने कि हम उसको रिविजिट कर सकें, अगर वो रिविजिट नहीं हुआ होता आज तक, या वो फर्द वाहिद हावी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन पे? इस सवाल का जवाब दीजिए। But if I may put it this way, certain decisions of this honorable court in the past does not lead to a situation where the same mistake should be repeated again. फिर आप हमारे पास क्या कर रहे हैं? नहीं सर, ठहर जाइए ना, ये मफरूजों में ना जाइए। हम देखिए, मैं जो बात करता हूँ मैं मफरूजों की कम करता हूँ, हकीकत की बात जात कर। पिछली तारीख पे हमने मौजूद थे, रिको डिक का केस का बताया, ठीक है। रिको डिक 3 मेंबर बेंच ने फैसला किया था, ठीक है। कोई दरवाजा नहीं था उसको खोलने का सिवाय एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एक स्ट्रेच जुरिस्डिक्शन आप समझ लें उसको, वहाँ इस्तेमाल किया गया। इस तरह का केस अब आप पाकिस्तान की तारीख से शुरू हो जाइए, मौलवी तमीज़ुद्दीन से शुरू करें, डोसो से शुरू करें, किससे शुरू करें, नुसरत भुट्टो की बात करें, और ये जफर आदि शाह की बात करें। ये इन्होंने तो आप किधर हैं? आप तो इधर बारीकियों में जा रहे हैं। उन्होंने पूरे शख्स को कह दिया तुम आइन से जो खिलवाड़ करना चाहो हम आपको दे देते हैं इख्तियार। ये इख्तियार आप बार बार आइन और कानून की बात कर रहे हैं, तो ये तो क्या जजों ने नहीं हल्फ तोड़ा अपना जब उन्होंने ऐसे फैसले किए? आप खुल की बात कीजिए ना। ये पाकिस्तान की तारीख को आपके नज़रअंदाज कर दें, हमारे एक बहुत फलसफाई बहस में पड़ जाते हैं। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें देखिए, पार्लियामान की कदर करना चाहिए। अगर कोई कानून, ये मेरी ज़ाती राय आप समझ लें, है तो आप उसको दिखाइए, ये लोगों का इसमें नुकसान है, ये आइन के शिक के बरक्स है। मेरे दोस्त ने बार बार फरमा रहे हैं आप प्रोसीजरल बात है तो कोई कर नहीं रहा है। आप लोग अगर आप मेरिट से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी तक अटैक भी नहीं समझ आए कि आपको पूरा पसंद नहीं है, उसकी कोई शिकें नहीं पसंद हैं, कोई प्रोसीजरल मैटर्स हैं, कुछ मैटर्स हैं जैसे कि जो आप 14 दिन में फैसले कर लें, ठीक है। अब ये यहाँ बैठे हुए हैं हमारे सदर, ठीक है, ये मौक़िफ़ पहले कहते थे कि जी फलां डॉक्ट्रिन है, केस लगता ही नहीं है, ठीक है। खुल के बात कीजिए ना, या तो ऊपर पीछे हट जाएं। वो कहते थे ये एक डॉक्ट्रिन है, मैं साहब का नाम नहीं लूंगा, केस ही नहीं लगाओ। ये आइन के मुताबिक है, ये कानून के मुताबिक है, ये क्या हल्फ के मुताबिक है? जब आप ये सारी बातों को नज़रअंदाज कर देंगे, फिर आप ये भी देखिए कि दुनिया में हमारा जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो करती हैं, सर्वे करती हैं, हमारा नंबर किधर है? हम नंबर नीचे ले जाना चाहते हैं कि नहीं, फ़र्द वाहिद का इख्तियार कम ना हो, और फ़र्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। मार्शल एक डिक्टेटर्स हो जाए या कोई और हो जाए, वो फ़र्द वाहिद होते हैं, वो इज्तिमाई सोच वाले नहीं होते हैं। वो कहते हैं मैं खुद फैसला करूँगा, आपस में नहीं करूँगा। हम आपस में फैसले करने वाली बात है। आपको क्या फिक्र पड़ रही है कि हम कैसे फैसला करें आपस में? हम 1 करें या 3 करें? आप 5 की बेंच सुन ले एक आइनी मसले को। एक चीफ जस्टिस गुजरे, उन्होंने कहा पहले 5 सीनियर चीफ जस्टिस जजेस सुन लें आइनी मसाइल को, ठीक है। इनका एक तर्ज कार है, अगर वही पार्लियामान कर दे, ओहो गुनाह हो गया। आप कर सकते हैं तो अगर 5 कर सकते हैं, फिर वो 2 भी कर सकते हैं, फिर वो 3 भी कर सकते हैं, फिर वो कह सकते हैं कि मैं जिस मर्जी जज को बिठाऊं वो भी मैं कर सकता हूं। तो देखिए, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, सदर ने ये कह दिया, अखबार की खतीम पढ़ लें, ये तो हमारी तारीख है, इसको भी मद्देनजर रखिए। और फिर आप ज़रा दलाइल दे दें कि ये पार्लियामान को आपने एकदम उस पर अटैक कर दिया कि जी उसको आप इम्प्यूट कर रहे हैं कि जी उन्होंने कोई गलत बदनीयती से। आपसे पहले चौधरी साहब ने कहा ये जी पर्सन स्पेसिफिक है, मुझे इसमें पर्सन किसी का नाम नहीं जिक्र आ रहा है, ना किसी का तस्करा है। हो सकता है आप ही कल इसका फ़ायदा उठा के हमारे सामने आ जाएं किसी केस में। तो आप ज़रा इतना नैरो विजन ना रखिए, ज़रा पूरा ब्रॉडन विजन कर लेना। और हमें जो आइन और कानून की जो बातें करते हैं, तो हमारे सामने एक सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए, लोगों के फ़ायदे की बात है या लोगों के नुकसान की। चीफ जस्टिस के फ़ायदे को आप छोड़ दीजिए। Well, this was not about the Chief Justice. I have got no lost love for any Chief Justice. Let me put it this way. I'll draw your attention to entry 58. So, as I've understood your argument that the Parliament is bereft of jurisdiction if it
wants to legislate in the context of Article 10A या इंसाफ तक रसाई, यानी वो आम शहरी के लिए बिल्कुल ये मान नहीं कर सकती. As I have correctly understood your point? Lordship, let me first address, I will come to your Lordship's question. Lordship, I have not used a single word that there was any, or nor I have imparted any insinuation on any one parliament or anything else. Your Lordship's point that what has happened in the past, in fact, our past is unfolded for us for a better future. So your Lordships are sitting as 15-member bench. Your Lordships can undo whatever the cases have been passed. What your Lordship is perhaps Excuse me, sorry, suggesting- we cannot. The appeal gives us the right to do it. आप कह रहे हैं we can, अभी तो आप contradiction कर No, रहे my हैं. lord, no. ये आपने तो पिछले जजमेंट्स की बात है. मैं जो आपको सबमिट कर रहा हूँ, Yes, वो sir, if I may ask एक you, मैं सिर्फ just सर, 1 minute. जी सर. The first time that this court upheld martial law was Doso versus State. In Asma Jilani, Doso versus State was set aside on as being not good law, as having made Pakistan a perfectly good speaker may country kindly into a put- laughing stock. Now the question is, when the court did that in Asma Jilani, was the court hearing an appeal against Doso versus State? Lordship, I didn't get your question. Maybe if you put your speaker on. Speaker is on. My question to you is that the first time that this court upheld martial law was Doso versus State. In Asma Janani, that judgment was declared not to be correct law. When deciding Asma Jilani case, was this court hearing an appeal against Doso? No. No. The court, if it wants to correct its past errors, it can do so. It doesn't need to have this kind of appeal in order to be able to do so. The court should have the stature, if it wants to, if it thinks an error has been made, it can correct that error. There are many ways, because we are a common law jurisdiction. We are driven by common law, by precedent. Doso versus State, Grand Norm, Tellson's theory, that was all precedent. Asma Jilani, totally different case, said wrong, that was wrong law. In the future, the court can do that. But I think, if I may, if you permit, I would like to ask you a question on 184.3. Because you read it out to us. Now you read out the word, the court shall if it considers. My question to you is, this consideration, is that judicial power or is that administrative? No, that's a judicial power. That's what the argument is. Therefore, it seems to me, because you see, it's very interesting that one of our learned colleagues in a number of, well, not number, but in more than one chamber appeals, he has made an order that the question of maintainability of a petition under Article 184.3 is adjudication. It is exercise of judicial power, and therefore the registrar can't do it. As I read section 3, it seems to me that that is what section 3 is conferring a power on the committee. Now, I read the decision of my learned and distinguished colleague to be a statement of principle. And if this principle is correct, surely it seems to me, but you can correct me if you think that I'm wrong. If this principle is correct, then issue of maintainability, whether decided by the registrar of this court or whether decided under cover of this act by a panel of judges, no matter how senior and eminent those judges, it is still exercise of administrative power. It is not adjudication, which maintainability requires because of the word considers. So would it be therefore correct to suggest that the use of this word considers, which necessarily means exercise of judicial power by the court, section 3 is in direct conflict with this requirement of Article 184.3, and therefore perhaps on that very short ground
is perhaps unconstitutional. Absolutely. And Your Worship, there are scores of judgments. As I said, I'm not going by the Learned judgment that the counsel- constitutionality has to be decided by the court itself. Learned counsel- That's the function of the court. If I may take this a little bit Learned further, counsel, if I may take just, if I may take, I'm sorry. answer the question. Please, Malak. Learned counsel, on the same argument, the power that earlier vested in the Chief Justice to consider and pick and choose whatever petitions he wanted to place before the court, that was also unconstitutional. Your Lordship, if I am too small a fry to raise this argument, but I think I have to raise this argument that Your Lordships are proceeding on a premise that this bench or the committee of 3 judges would be able not to pick and choose. And it is, if past experiences are any learning curve for us, it will not be difficult for us to imagine even a committee where the 3 judges are on the same page, as they call it, and then still just decide to fix the benches, then that would be going on a mafruza, if Your Lordship would say. आप मफरूज़ों की बात कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम तीनों मिल करके आपके खिलाफ फैसला कर रहे हैं जी इरफान साहब के केस नहीं है, ठीक है, सुन लीजिए। आप कह सकते हैं 5 की कमेटी बनाए, वो भी बना सकते, कर सकता है, पूरा फुल कोर्ट करें, वो भी कर सकता है, मगर ये जो कानून है इसकी सिमत सही है या नहीं, आप मद्देनजर रखिए जो हो चुका है पाकिस्तान में। अगर आप कहें नहीं, मैं तो एक मफरूज़े पे बात करूंगा, पाकिस्तान की तारीख को नज़रअंदाज करना चाहता हूं, तो वो एक अलग बात है। तो इस तरह तो अगर आप कहें तो, मगर वो अंग्रेजी में कहावत है सेफ्टी इन नंबर्स, ठीक है, हो सकता है हमें बड़ा इख्तिलाफ हो जाए, ठीक है, हो सकता है हम, आपने जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सेम पेज पे हों, मगर ये बेहतर है या वो बेहतर है। तो मफरूज़ों पे ना चलिए, आप सिर्फ बताइए। एजाज साहब बार बार आपसे 2 बुनियादी सवाल उनके वहीं के वहीं रह गए, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, उन सवालों पे अगर आप फोकस करें तो ज़रा आपके लिए आसानी होगी। आप उन्हें लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मेरा बार-बार वही जवाब है, it has to follow the law, constitution. Mr. Hassan, I'm right here. Sir. Just following that, Justice Ijaz had already quite, succinctly pointed out the question, and we're going all over the place. Let's just get done with the competence. To me, competence revolves around Article 191, entry 55 and 58. So direct question to you is there a parliamentary competence under 191 itself? Because competence can come through 2 ways. One is through the Constitution itself, or the other is through the entries in the Constitution. So the direct question is, under Article 191, can the Parliament legislate regarding practice and procedure? We'll come to the appeal later and see whether at all it's part of practice and procedure or it's a substantive separate provision. Usko chhod dein. Abhi sawal पूछ रहे हैं कि क्या 191 directly or read with 58 gives Parliament the power to legislate regarding practice and procedure? No, my What's your answer to that? My short, clear and crisp answer is no. No, please tell us how. How? Because if Your Lordship would read 142 read with 191, Right. so because there is a direct power to the Supreme Court to make rules, So power to the Parliament to make law under law 191 relating to what? to the practice and procedure. It doesn't say so. Where is that? It is, so practice and procedure is not आप जरा enlargement पढ़ of the लें, power. 191 को एक दफा पढ़ लें। जी my lord. Let's read 191. फिर बताएं कि क्या वो पावर दे रहा है या नहीं दे रहा है। 191. Rules of procedure. Subject to this Constitution and the law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. So the question is that it says that the practice and procedure could be regulated by the Constitution itself, by the law given by the Parliament, or by the rules made by the Supreme Court. There are 3 different sources Yes. which could regulate the procedure. And nothing is redundant in the Constitution, so there could be a parliamentary act passed by the Parliament which could regulate the practice and procedure. And any rules would be subject to the Constitution as well as to that law. So the law 191 itself is authorizing the Parliament to go ahead and come up with legislation on practice and procedure. And if not, to read it 58, then again
Parliament gets the competence to legislate regarding practice and procedure. That's a separate question. What is practice and procedure? It's a separate question whether at all that legislation then does not pass the constitutional muster as far as fundamental rights are concerned. We'll come to that later. आपसे सिर्फ सवाल ये है कि 191 रेड विद 58 कैसे नहीं पावर देता पार्लियामेंट को कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे कानून साजी करें? सर मैं इसका जवाब आपको देता हूँ. Again, there is a distinction between. Mr. Hassan, यहीं पे इसको supplement कर Sir. लीजिए question को, whether the word law used in Article 191 can be construed in a sense conferring a power on the Parliament to legislate on the practice and procedure of the Supreme Court, or it should be construed in a sense limiting the power of the Supreme Court to frame rules. Sir, ये अपने एक judgment में the Supreme Court has interpreted what does subject to the Constitution and the law mean. In the context of 191, the power, आप इसको पढ़ें, the Supreme Court may make rules. The power lies with the Supreme Court. Supreme Court. और जो subject to law and constitution लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कोई restriction Supreme Court के कोई restriction Constitution में या कोई restriction existing law में ना हो तो उसके मुताबिक Supreme Court अपने rules बनाएगा. If there is a restriction in the Constitution or if there is a restriction in an existing law, उसके contrary Supreme Court rules नहीं बनाएगा. लेकिन rules कौन बनाएगा? Supreme Court. Supreme Court बनाएगा. और in ठीक है? इसको restriction existing law और existing law they're defined है 267. सर इसमें इसको अगर इस हम तरह ले लें, existing वकील law साहब। में अगर restriction नहीं है, Constitution में restriction नहीं है, then the exclusive power to make administrative rules or internal rules or rules of procedure, exclusive power is with the Supreme Court. Sir, this It is does not confer jurisdictional or it does not confer competence on the Parliament to 191 does not confer power on the Parliament to legislate on practice and procedure. I'm grateful for raising this question. In fact, I have made a list. चले चले बढ़िए आगे. My lord, if I may submit. नहीं सबमिट करें, घड़ी को भी देखिए. My lord, जी. अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बिट्स एंड पीसेस में इंटरप्रेट करना है, then we may not be able to reach any conclusion. If we have to read as a whole, मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए ये जजमेंट आपने वो देखी है जिसमें ये इंटरप्रेट हुआ है. जी मैंने ये आपको रिप्रोड्यूस की है. अच्छा पहली बात एक चीज मुझे बता दें, आप क्या अग्री करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कर सकती है? सर मैं एग्री करता हूं इस चीज से कि सुप्रीम कोर्ट जो करे वो कर सकती है. अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए, ओपन-एंडेड ना करें. नहीं रुक जाइए, मैं नहीं अग्री करता हूं. ठीक है. और हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. जिस किस्म के प्रेसिडेंट्स विलायत में बनते हैं, कॉमन लॉ जिसको हम कहते हैं, हमारे उसमें आइन में इंदिराज आ गया है. जैसे लफ्ज आ गया ना, डिफेंड, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब ये अदालत, और मैं खुद एतराफ़ करता हूँ, और जब तक आप एतराफ़ नहीं करें सलाह हो ही नहीं सकती है. वो आया कोई शख्स आया, जी ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, आइन को आप रोंद लें, आप आइन को बदल लें. तो ये अगर हम इस पे चलें तो फिर इसका मतलब है हर बेंच जब उस वक्त में फैसला करेगी वही लागू होगा. आइन का तो कोई अहमियत रही नहीं. फिर तो जजमेंट लॉ पे हम चलेंगे. आइन को एक तरफ रख दें, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का मूड ये है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का फैसला सही है और 4 जजेस जो सिंध हाई कोर्ट का उनका गलत है. फिर मूड हुआ कि जी 200 केस में वैलिडेशन और मार्शल लॉ तो सही है. फिर जिलानी नहीं आज सही नहीं है, नहीं फिर सही हो गया और फिर नहीं सही हो गया. मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बुनियादी सवाल तो ये उठता है, आप क्यों नहीं आप हिम्मत पकड़ते हो कहें सुप्रीम कोर्ट गलत थी, क्योंकि आइन के बरक्स. या कहिए, हिम्मत कीजिए और कहिए नहीं बिल्कुल, या आप कहिए हम जंगल के बादशाह अंडा दें या बच्चा दें.
क्योंकि आप, मुझे लग रहा है आप आखिरी बात कर रहे हैं। सर, मैं ना तो कह रहा हूं आप कि ना आप पहली किश्ती में चाहते हैं, ना दूसरी किश्ती में जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं ये आखिरी बात कर दूं, जो मुझे जेब नहीं देती, क्योंकि मैंने ऐसा हल्फ उठाया नहीं है। सर, आपने हल्फ उठाया है प्रिजर्व का इंग्लिश का कॉमन मतलब क्या है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप वर्ड्स पे जाते हैं और आप स्टारे डिसाइसिस में नहीं जाते, पूछ रहा हूं, तो आप फिर ही राय तो दीजिए फिर ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन का एक लफ्ज इधर उधर नहीं कर सकते। प्रिजर्व मींस यू हैव टू प्रिजर्व इट, डिफेंड इट, यू हैव टू डिफेंड अटैक। और कितना वक्त आप ले रहे हैं अभी, आप बताएं। सर, अब मैं क्वेश्चन मेरे मेन Learned Counsel coming back सर, अगर आप माइंड वो बहुत सारे उनके क्वेश्चंस थे। Learned Counsel coming back to my Lord Justice Ijazul Hasan's question, ये जो interpretation है 191 की, how do we read into this provision that subject to law means a restriction in law and that the primacy is to be given to the rules made by the Supreme Court? ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना सर। जो 191 की पास हैं, दे आर डायरेक्टली कमिंग, जो मंसूर अली शाह साहब ने भी क्वेश्चन किया था, दे आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। द क्वेश्चन ऑल्सो अराइज, कैन द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल मेकिंग पावर कैन बी स्टल्टिफाइड बाय अ सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन? Because whatever has to be done, it has to be done through an internal mechanism. ये तो आप दोहरा रहे हैं अपनी बात, कोई नई दलाइल दीजिए ना। मैं अगली बात के ऊपर सर एक मैं सिर्फ बात कर लूं, तो जवाब जो था वो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन इसी कंटिन्यूएशन में सवाल देखें ना, आप ये 191 की बात कर रहे हैं, वो तो जो उसकी ओपनिंग वर्ड्स है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जो मैं समझा एज फार एज इसमें तो शायद ये है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकती है अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के, लेकिन दैट मस्ट बी सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट का इख्तियार है। उन इख्तियार के तहत, उस लॉ के तहत जो भी रूल्स बनेंगे, हम उस रूल से, उस लॉ से हट के बाहर नहीं जा सकते। क्या इसका ये मतलब नहीं? यही क्वेश्चंस तो आप लोगों ने रिजॉल्व करने हैं। इफ द मेजॉरिटी विल, तो फिर करने, तो फिर आप बैठ जाइए, हम कर लेंगे, फिर आपकी जरूरत नहीं है, आप तशरीफ रखिए। फिर आप मेरी बात तो सुने। द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट 191 को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। 191 में सिर्फ नहीं, मगर आप बात ही नहीं समझे। अगर आप उसकी ओपनिंग वर्ड्स देख लें, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, माय लॉ, जरा सुन लीजिए ना। जैसे जमाल साहब ये कह रहे हैं, तो ये एंड लॉ लिखने की जरूरत क्या पेश आई? सिर्फ लिखते सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। ये लॉ जो दो लफ्ज हैं, इसको हम कैसे इसकी तशरीह करें, ये सवाल है। सर, इसमें एक जवाब तो ये है कि जिस वक्त ये रूल्स बने थे, अगर कोई लॉ मौजूद हम होता, आइन की बात कर रहे हैं, रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं। जी, मैं आइन, सर, जिस वक्त आपने सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाए थे, उस वक्त अगर कोई लॉ मौजूद होता, तो उस